So hi everyone, today we have a special guest on our channel. We have Aditya with us. So Aditya, would you like to introduce yourself once? Hi, my name is Aditya Kumar, and I am third year computer science and engineering student at Maharaj Surajmal Institute of Technology, and I have been doing CP and DSA for last 1 year. Mhm. Right. So the story with Aditya is like this basically that I found a LinkedIn post of him where he mentioned that he became expert on code forces within a span of around 3 months. And I found him from there basically, and I wanted to get him on the podcast to talk about his problem solving journey. Because becoming an expert at code forces is a pretty good achievement. If you are able to do that, then you can easily become good at problem solving, DSA, and other things. So that's what this podcast will be about. And I'm very happy because I haven't done a CP podcast in a long time. So definitely this is going to be an interesting one. So the first thing that I want to ask you, Aditya, is when did you exactly start coding? Like after coming into college, when did you start this problem solving or your DSA journey? I started my coding journey in like DSA in the end of my second year. In fourth sem, uh, So I started with Leetcode, so because my like I had few friends which were giving contest and doing DSA. So I saw them and I started as well with them. So we have started from there onward. So at start, I gave few contests in lead code. So I was not getting a good rank in that. So I started like solving more problems. Then that's how it started. So like it was like 1 year period from where I started till now. So I have been doing like for last 1 year. Hmm. Right. So basically, I think you did a little opposite because generally, what people do, and even what I did, is that we started with CP, then we went into lead code. So for you, you were saying that you started with lead code and you tried a contest, but you didn't perform that well, and then you did problems, and then eventually you jumped into code forces, right? Yes. So first, like my friend was doing lead code. I didn't know about like code forces. I only know about lead code and code chef. So I was only on that platform at that time. So I have done only for like next 10 months. I done questions on only lead code only. Hmm. Right. And now you're doing both parallel, like lead code, code forces. Now I only do like problem days in Leetcode and other platforms. And now like the practice question, I'm only doing it in Codeforces. Right. So this is a good thing to take away, especially to all of my viewers who are college students. I always say कि do CP, at least give CP a try. You have to do lead code. मतलब lead code से तो भाग ही नहीं सकते हो, तो करना ही पड़ेगा as long as the interviews are like that. But CP as an extra, like Aditya did, if you do CP and you do lead code, so it basically boosts each other. आपका कोड फोर्सेस का परफॉर्मेंस लीड कोड को बूस्ट करेगा, लीड कोड का परफॉर्मेंस कोड फोर्सेस को बूस्ट करेगा. So that is something that I feel everyone who's in college should take away. All right. So speaking more about how you improved in problem solving, क्योंकि बहुत लोग को मैंने देखा है even now they go on code forces and बहुत most of them pupil पे ही stuck हो जाता है. ये बहुत लोग newbie पे stuck हो जाते हैं, specialist expert तक बहुत कम लोग जा पाते हैं. So I want to know what was your strategy in problem solving कि मतलब did you follow a strategy कि you had some resource या you had some a particular mode of problem solving कि you were able to progress so well in such a short period of time. So first I started with like watching few lectures of DSA. So like there was like a popular channel in like 2024 if उसका नेम कोडर आर्मी था सो ही स्टार्टेड लाइक 100 day challenge in DSA so I followed for like 60 days in that so that improved my like C++ STL then I started solving problem of on lead code so he was solving problems on lead code so that's how I started also on lead code so उसके बाद मैंने
Then I started solving problem days. So like there is like an interesting thing about like problem days in Leetcode. If if you are getting us some topic problem for like a 1 day, then next few days the questions will be on the that same topic. So उससे काफी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा जो भी हम टॉपिक कर रहे होते हैं। तो उसका मैंने सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करे थे जो भी प्रॉब्लम डेज थे उनमें लाइक मेरे फ्यू मंथ्स में लाइक 3 to 4 months स्पैन में मैंने डीएसए के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे जस्ट बाय डूइंग प्रॉब्लम डेज। So that's how I learned like those topics. So these topics were enough for me to like reach night in lead code. Then I started solving problem based on my rating, and like I was getting stuck in the third problem. So I like sorted all contests and started solving all the 5 pointer third questions in lead code. So that's how I reached a higher rating in lead code. Then when I did this, I got good at lead code by like solving based on my rating. So at that time I was 1800 rated. So in few months I reached 1800 rating. So then I started solving problems based on my rating. Uh, let's say my rating was 1800. So then I started solving problem of 1900 to 2000 rated problem. So at start I was not able to solve many of them. So uh, then I spent like few days thinking of solution of a problem. So I picked like 5 problems. Then I will try to think of the solution of those problems for like few days. So if I am not able to come up with any solution, then I pick another problems, another problems, and then try to solve them. So that's how it started, and I got good at problem solving. Right, right. So you're saying that whenever you were doing problems, whenever you're doing practicing, you did not jump to the editorial. Rather than that, you used to sit with the problem. जैसे कि कोई problem नहीं हो रहा है, you used to sit with it, think for it, and then नहीं हो रहा है, you used to move to a different problem, and then circle back to it, right? Yes, yes. So Hmm. जो स्टार्टिंग के फ्यू मंथ्स थे तो उनमें मैंने जो मैं पहले टॉपिक देख लेता था जो भी प्रॉब्लम डे का था अगर वो मेरे को नहीं आता टॉपिक तो मैं फिर लाइक फुल डे इन्वेस्ट करता था अपना उस टॉपिक को सीखने के लिए लाइक लेट्स से ग्राफ का क्वेश्चन है तो आई यूज टू मैंने ग्राफ मैंने यूट्यूब पे सर्च करा कि ग्राफ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं सो लाइक उसमें एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करनी होती है और फिर लाइक उसमें डिफरेंट ट्रैवर्सल्स होते हैं तो लाइक डे वन में मैंने उसको फिर उन सारी चीज़ों को पढ़ लिया और फिर मैं लाइक एंड ऑफ द डे मैं उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता था स्टिल अगर मेरे से वो सॉल्व नहीं हो रही थी तो मैं उसको फिर लाइक उसका लाइक डायरेक्टली सोल्यूशन देख लेता था यूट्यूब पे कि क्या सोल्यूशन है देन आफ्टर फ्यू मंथ्स जब मेरे को पता चल गया कि मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए then I then I don't then I stopped looking at any solution or any hint. Then मैं डायरेक्टली लाइक फ्यू आवर्स स्पेंड करता था फिगर आउट करने के लिए कि क्या टॉपिक लग सकता था देन अगर स्टिल मेरे को कुछ नहीं आ रहा उसमें समझ में कि क्या हो सकता है तो देन आई यूज टू लुक अप द हिंट्स और लाइक टॉपिक व्हाट टॉपिक दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू then this was like for prowler days then I used to do another like practice questions so I used to like sort questions by their ratings so for me I when I did like मेरी जो करंट रेटिंग है उससे +100 to +200 हाँ, रेटेड प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करता था हाँ. एंड दिस इज हाउ आई बिकेम गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग Understood, understood. And there's a great tip that I want to give here. Especially a lot of people, what they do, they jump too early into the solution. तो अगर आप बहुत बिना struggle के, if you go to the solution directly, your mind is not going to register. So one thing that you can do, like Aditya mentioned, is you can give it some amount of time. As long as you have time for problem solving, give it some time, give it your best. Struggle a bit,
एंड देन यू कैन टेक अप हिंट्स. अब बहुत बार लोग हिंट्स नहीं देखते हैं, डायरेक्टली एडिटोरियल पे चले जाते हैं. A better thing you can do is go to ChatGPT, feed it the problem, and you can mention it. Okay, I'm trying to solve this problem. Give me some bare minimum hint. Don't tell me the solution. It might give you a good hint or two, and then it will click for you. You know, will have that aha moment. And once you learn like that, वो तुम्हारे brain में register हो जाएगा. You'll never forget, or you'll never, like lose that implementation. But अगर solution से देखोगे, you will keep forgetting the problems every time you do, right? Yes, there was another thing I used to do was that there's a channel called Neetcode. So उस चैनल पे वो चैनल पे जो भी solutions है वो पाइथन में कराता है. So I used to do CP in C++. So whenever I have to like look up the solution, I used to look up it in the Neetcode channel because the code was in Python. So I was only learning the concept behind the question and not learning the code. So I am not like directly copy pasting the code. I so the code was in Python, so I have to implement it by myself. So that helped me a lot because like I was not looking up the solution. I was coding it by myself. So this also improved my implementation skills in C++ also. That is very true. Code तो copy करना ही नहीं है, मतलब even if you see a hint, see a solution, even if you see the complete editorial, never ever ever copy the code. Always write the code yourself. ये तो मतलब is one of the most important thing that I hope everyone is following. And if you're not, then 100% you should. All right. So if we talk more about your lead code journey, like you mentioned, you started with Coder Army ka channel. You did problem of the day, which you feel was very beneficial to you. You gave a lot of contests. You were regular at lead code contest, and you basically improved bit by bit, topic by topic. So can you give us a range of how many problems you have solved over lead code? So in Leetcode, I solved around 1100 problems till Damn. now. Nice, nice. All right. And like, what point did you feel? After what point you felt the lead code contest started to become easy for you? That you were able, because like you mentioned initially in lead code contest you were not able to perform well. तो वो पॉइंट कब आया कि यू वर एबल टू डू कि हाँ तीन प्रॉब्लम्स हो जा रहे हैं या कभी चार प्रॉब्लम्स हो जा रहे हैं, वो वाला पॉइंट का ब्रिज कैसे हुआ? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो. तो जब मैं रेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था तो ना मेरे को लाइक इफ मैं 1900 रेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो आफ्टर लाइक 20 प्रॉब्लम मेरे पे कॉन्फिडेंस आ जाता था कि अब मेरे से ये प्रॉब्लम हो जा रही है. तो नेक्स्ट फिर लाइक 10 प्रॉब्लम में से इजीली हो जा रही थी. उसके बाद फिर ऐसे ऐसे होते हुए मेरे को लाइक उस पे मेरे को दिख भी रहा था कि ये कौन सी प्रॉब्लम्स है कॉन्टेस्ट में. तो एक साइट है गिटहब पे जीरो ट्रैक करके नाम है उसका. सो उसमें आप रेटेड प्रॉब्लम्स देख सकते हो और वो लाइक कौन से क्वेश्चन नंबर थी. सो जब मैं उस पे सॉल्व करता था तो मेरे को पता चल रहा था कि कौन से क्वेश्चन है ये कौन से नंबर के क्वेश्चन है और कितने पॉइंट के क्वेश्चन है. सो उससे मेरे को काफी कॉन्फिडेंस आने लगा कि मेरे से लाइक ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है. लाइक मेरे से थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है इतने देर में. उसके बाद फिर जब मैं कॉन्टेस्ट में जाता था तो मेरे पास कॉन्फिडेंस होता था कि मैंने लाइक अभी कुछ दिन पहले 10 प्रॉब्लम्स Q3 प्रॉब्लम्स करी हैं. सो उससे मेरे को काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ. और जब मैं कॉन्टेस्ट पे जाता था तो मेरे को लगता था कि लाइक ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी मेरे से क्योंकि मैंने थर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारी कर लिया. Right, right, right. So basically, most of it was a structured practice way, right? By the way, the link that he is mentioning, we'll put it in the description box. All of the resources will put in the description box so that if anyone is interested, they can check it out. All right. So the lead code journey went like this that you explained. Now more about the code forces journey. क्योंकि कोड फोर्सेस लीड कोड से काफ़ी डिफरेंट होता है ना. लीड कोड के लिए इट्स मोर ऑफ अ टॉपिक बेस्ड लर्निंग वेर यू हैव टू लर्न टॉपिक फर्स्ट देन सॉल्व प्रॉब्लम्स. कोड फोर्सेस इज मोर इंट्यूशन बेस्ड है ना. वो ज़्यादा इंट्यूशन के ऊपर काम करता है. इट्स मोर मैथमेटिकल ओरिएंटेड. इट्स मोर बेसिकली comes with experience. It's not an exact theory that you can learn. So how did you improve in code forces in terms of rating, like from specialist to expert? तो फर्स्ट मेरे को भी काफी प्रॉब्लम आई थी लीड कोड से कोड फोर्सेस में शिफ्ट करने में क्योंकि लाइक कोड फोर्सेस पे ग्रीडी आइडिया बहुत ज्यादा होते हैं. ग्रीडी
एंड कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम वाले क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं। सो लीड कोड में मेरे को फील हुआ कि लीड कोड में ज़्यादा ग्रीडी क्वेश्चंस नहीं है, और ज़्यादातर उसमें डीपी और डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड, हैश मैप बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो और एक और प्रॉब्लम आई थी मेरे को कि जो मैं ज़्यादा मैप पे डिपेंडेंट हो गया था, जो हैश मैप होता है उस पे डिपेंडेंट हो गया था। सो कोड फोर्सेस में आप डायरेक्टली हैश मैप यूज नहीं कर सकते, वरना आपका सोल्यूशन हैक हो सकता है। So first I have to learn greedy. So I did so at the start, first I did like 10 to 20 problems in low rated, like 1,000 rated problems. So to build like confidence in my problem solving in code forces, uh, पहले मेरे को पहले जो मेरे को इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, उसमें कैसे आउटपुट डिस्प्ले करना है कोड फोर्सेस पे, ऑनलाइन जज पे, वो सीखना पड़ा था। उसके लिए मेरे को लाइक 20 क्वेश्चंस करे थे, मेरे को फिर उससे आ गया था। सो लाइक मैंने लीड कोड पे मैं गार्डियन था उस टाइम पे, जब मैं कोड कोड फोर्सेस स्टार्ट करा था मैंने। तो मेरे को स्पेशलिस्ट पहुंचने में लाइक फ्यू कॉन्टेस्ट, लाइक 10 कॉन्टेस्ट लगे होंगे मेरे को स्पेशलिस्ट पहुंचने में। देन आई then in the start of this year, I again started Code Forces. So I had a goal to reach expert. So in the start, I know what have to do. So मैंने कोड फोर्सेस पे तो रेटिंग सॉर्ट करने का भी ऑप्शन होता है। सो आई यूज्ड दैट ऑप्शन। सो आई सॉर्टेड, फर्स्ट आई डिड सम 1500 रेटेड प्रॉब्लम। देन मैंने फिर 1500 में मेरे पे क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा सा कि 1500 मेरे से सॉल्व हो रही है। उसके बाद देन आई स्टार्टेड विथ 1600 रेटेड प्रॉब्लम। देन मैंने ऑलमोस्ट लाइक 50 to 60 प्रॉब्लम्स 1600 रेटेड करी। उसके बाद मैंने 1700 में स्विच करा, 1700 में लाइक 40 प्रॉब्लम्स करी। फिर मैंने 1800 पे स्विच करा, फिर 1800 में लाइक मैंने 30 प्रॉब्लम सॉल्व करी। देन आई फील लाइक जो मेरी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स थी 1600 में, अब मैंने जब 1800 सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं अब जो मुश्किल वाली जो 1600 जो मेरे से पहले सॉल्व नहीं थी, सो वो मेरे सब सॉल्व हो जाएंगी। जैसे मेरी नंबर थ्योरी और ग्रेडी वीक था, तो मैंने 1800 तक जो जो टॉपिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग थे उन तक की प्रॉब्लम सॉल्व करी। देन आई मूव देन आई मूव टू लाइक नंबर थ्योरी 1600 रेटेड प्रॉब्लम, बिकॉज उनमें लाइक थोड़ा और इंट्यूशन लगता है जो जो मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं लीड कोड पे नंबर थ्योरी और ग्रेडी के क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। सो आई हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग, आई हैव टू लाइक make strong my number theory and greedy. So after just like solving 1800 rated problems, I was able to solve a few 1600 number theory problems. So that's how I good at my weak topics, by solving like higher rated problems. Hmm. Understood, understood. All right. So that is a great approach. Main thing is that whether it's code forces, whether it's lead code, a structured way of problem solving, a structured way of learning is something that you absolutely need. If you're just doing random solving, then you're not going to improve. And even if you improve, it will be at a very slower stage than you will with, basically a structured approach. So not only you need hard work, but you need sort of some planning, sort of some structure, like Aditya mentioned, the way that he has followed. All right. So, on a final note, what advice would you like to give to people who are watching this video? They want to become good at problem solving. They want to become good at lead code. They want to become good at code forces, and problem solving in general. So, what advice would you like to give them? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि लाइक सीपी को लाइक करने में लोग सोचते हैं कि 1 या 2 मंथ में कर लेंगे हम लोग। सो मैं कहूंगा कि लाइक एटलीस्ट 1 ईयर तो लगता ही है सबको करने में। सो इस वे में लेना चाहिए डीएसए एंड सीपी को कि लाइक 1 ईयर तो लगना ही है, तो हमें लाइक फर्स्ट फ्यू मंथ्स पहले सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। और लाइक टॉपिक्स लाइक ऐसे नहीं कर रहे कि हम फर्स्ट मंथ पूरा लेक्चर ही देखे जा रहे हैं, प्रॉब्लम एक भी सॉल्व नहीं करी। देन फिर बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करनी स्टार्ट करी। मेरे हिसाब से पहले हमें प्रॉब्लम देखनी चाहिए, फिर देखना चाहिए कि वो कौन से टॉपिक पे लैग करना चाहिए, और फिर हमें वो टॉपिक पढ़ना चाहिए। सो उससे हमें फिर पता लगेगा कि उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या थी और वो क्यों यूज हुआ उस क्वेश्चन में। सो इससे
इंट्यूशन बिल्ड होगी कि कहाँ पे कौन से टॉपिक यूज होंगे और क्यों यूज होंगे। सो फर्स्ट फ्यू मंथ्स मेरे ख्याल से टॉप पहले तो कोई रैंडम प्रॉब्लम्स एंड टॉपिक्स वाइज करना चाहिए। देन आफ्टर फ्यू मंथ्स जो रेटिंग है, कॉन्टेस्ट रेटिंग है, उस हिसाब से फिर रेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने चाहिए। Right. मतलब eventually you have to reach farther basically, right? It's similar to strength training in gym. थोड़ा थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा, +100, +200, and eventually you need to give contests, right? That is, I feel, is the most important part. With both in code forces and lead code, try to give as many contests as you can. This is like real training, or real life problem solving kind of sort of a thing that you'll get. So contest dena is equally important. Like, problem of the day is there, other things are there. All of these you can use to become basically a master of problem solving, right? All right. Okay, so I guess that covers pretty much everything about Aditya's problem solving journey, and how he got good at problem solving on both lead code and code forces. So thanks a lot, Aditya, for coming on my channel and sharing your entire journey and sharing these amazing tips with me and my subscribers.